So, dear students, we were doing multiplication in the last class, right? And what we were doing? Multiplication of two-digit number by two-digit number. यही किया था. And that concept we have taken was very simple, जिसमें इतने carry overs नहीं थे. Today again we will start with this same topic. ओके एंड टुडे एक स्टेप आगे चलेंगे इन सम्स में से जिसमें ज्यादा कैरी ओवर्स होते हैं और इनकी ही प्रैक्टिस करेंगे. वी विल नॉट रन फास्ट, हम ज्यादा क्विकली नहीं करेंगे बिकॉज बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम भी आ सकती है. कई स्लो राइटर्स होते हैं, स्लो लर्नर्स होते हैं. नो प्रॉब्लम, हम सबकी पेस को मैच करेंगे और कल वाली चीज को टुडे अगेन वी आर गोइंग टू रिवाइज, राइट? सो फॉर दिस ओपन पेज नंबर 57. वैसे पेज नंबर की नीड नहीं है. आई विल राइट सम ऑन द बोर्ड एंड वी टुगेदर विल सॉल्व इट. ओके, so page number is 57. Exercise is 4D, right? Exercise is 4D. And you know what is the meaning of product? Again I am asking you, what is the meaning of product? I know everyone knows now. What is the meaning of product? Yes, very good. Multiply. Product means multiply. So we are going to do multiply and you will do this sum in your notebooks, bache. And don't ask me where to do. You will do this in your notebooks, right? Because we are going to solve. I am going to solve here and you will solve with me. So A part is 28 by 16, and already I have told you what is the meaning of by. By means multiplication, right? So multiply 28 by 16. So for this what we will do, firstly we will arrange these two numbers according to its place values, right? So 28, it's a two-digit number, so we will write here ones, tens. Okay, so we are going to arrange it 28 and here 16, and we will put a multiply sign and then we will start doing our division, multiplication. Okay, so now मैंने आपको कल भी बोला था, जैसे ये है 28 and 6, हम क्या करते हैं, हम एक बारी 28 को पहले 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन 28 को हम 1 के साथ भी करेंगे. दोनों के साथ करना होता है. ये आई एम टेलिंग यू दिस सिंपल वे दैट दिस इज द 28. ये 28 पहले 6 के साथ होगा, फिर यही 28 बाद में 1 के साथ होगा, लेकिन थोड़ा सा वे इज डिफरेंट. क्या वे है? चलो सबसे पहले 28 को 6 के साथ लेट्स डू. साइड पे मैं कर रही हूँ. 6 8 जा, रिकॉल करो टेबल को माइंड में. 6 8 जा, कर रहे हो आप साथ में, आई नो. Yes, very good. 6 8s are 48. So 8 will be written here and 4 will be carried over. Next is 6 2s are 12. 12 plus 4 16. And यहाँ पे तो आ गया 168. So here firstly we will write 168. और कल मैंने क्या बताया था, जब इतना हो जाए when we move to the next step, firstly at ones place what we will put? At ones place हम क्या लगाएंगे वहां पे? भार्गवी ने आंसर लिखा है, वेरी गुड. बट व्हाट आई एम आस्किंग, आंसर दिस प्लीज. इन द नेक्स्ट स्टेप when we will start writing from ones place, what we will write? Yes, Dhankor, Josna, very good. What you will write? Plus sign. Why plus sign? Because we have to add these two numbers which we will get, right? Okay, now 28 को 1 के साथ करेंगे, 28 ही आएगा. ये है हमारा रफ वर्क, पर हम यहां से भी करेंगे. 1 8s are 8, 1 2s are 2, ऐसे. ओके, और ये रफ वर्क आई एम गोइंग टू इरेज. और बच्चे, बहुत सारे बच्चों के माइंड में क्वेश्चन होगा वेयर टू पुट कैरी ओवर, है ना, कि हम कैरी ओवर्स कहाँ लगाएंगे. कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू कैन ऑल्सो पुट योर कैरी ओवर्स हेयर और साइड और इन योर माइंड ऑल्सो. आप अपने माइंड भी रख सकते हो, साइड पे भी कहीं कर सकते हो, और जहां पे हम ऊपर सर्कल्स लगाते होते थे देयर वी कैन ऑल्सो राइट. Okay, so there is no any hard and fast rule that carry over should be there or not there. ऐसे कुछ नहीं है. Okay, yes, very good. Samar, Sameer, already you are writing the answer. Very good.
So here is 8 and यहाँ पे कुछ नहीं है, plus है, means we will consider it as 0. So 8. Next is 6 plus 8. 6 plus 8 is 14. So 4 will be written here and 1 हम यहाँ पे carry लगा देंगे. कोई problem नहीं है, हमें जहां भी convenient लगेगा, we will put the carry over there. ठीक है? Now 2 plus 1 3 plus 1 4. So this will be the answer 448. Clear? 448 is the answer. So I hope your concept is clear. कल से थोड़ा सा ही बिग नंबर लिया और आगे हम और बिग नंबर्स करेंगे, लेकिन we will start from the basics. पहले हम धीरे धीरे करेंगे, then we will catch our speed. What Josna? Ma'am, please unmute Josna. गुड आफ्टरनून मैम। Good afternoon बच्चे, yes please. मैम जो अभी हमने 8 में 6 प्लस किया तो 48 आया मैम, फिर हमने जो 4 कैरी ओवर किया हम उसको यूज नहीं करेंगे। यूज किया तो बच्चे, सी 8 plus 6 is 14. 4 मैंने यहाँ पे लिखा, 1 ये कैरी ओवर लिखा तो हुआ, मैंने आपको दिखा नहीं होगा क्योंकि छोटा सा है ये, ऐसे मैंने 1 कैरी ओवर लगाया है. एंड सी 2 plus 1 3, 3 plus 1 4. That's why I am written 4 here. नहीं तो अगर मैं इसे यूज ही ना करती तो 3 आना था ना. Clear? Carry over I have used. After using the carry over, the answer is 448. So show me your notebooks everyone बच्चे in front of the camera. So I want to see all you have done or not. Okay, very good. Ableen बच्चे show me. जो show नहीं करेंगे I will take only their name. हर्षित वर्मानी. Show me बच्चे. Jaspreet Kaur. You are doing? Do it fast बच्चे. Let's finish it. Yes, mostly students have done. Very good. पीयूष शर्मा, इतनी ऊपर नोटबुक की आपने कि मुझे दिखी ही नहीं. Beyond the camera. Yes, Anisha. Okay, Harshit ने okay done. Saksham, show me. Show me your notebook. Saksham Dhingra in front of the camera. Okay, right. Okay, so now let's do the second sum. Second is, this was A part. Now we are moving to C part. 35 by 12. सिंपल है, जैसे अभी हमने किया exactly वैसे ही है. 35 by 12. Okay. So firstly what we will write? Ones and tens. We will arrange the numbers according to its place value. Right. So 3 will be written here and 5 and 12. So firstly we have arranged the numbers according to its place value. जल्दी से पहले इतना कर लो, then we will do together. जब हम साथ में करेंगे then the concept will be clear more. यक्षित बच्चे, आपको ब्रेकफास्ट पहले करके आना चाहिए था. Okay, Raghav has written answer. Ma'am, this is B or C part. Bachche, this is C part. B part is of 3-digit number. And still we have not done 3-digit number sums. That we will do in the next class. हम line wise चलेंगे. पहले मैं 2-digit I will complete. After that I will go to 3-digit number. So that's why I have taken. Very good. Mostly students have written the answer. 420. So this is the thing which I needed. Why I have chosen to do this topic again. For this कि आपको complete समझ आ जाए concept. अगर मैं आज एक नया topic ले लेती, so it would be difficult for you to understand the topic. So that's why I have taken the topic again. Today we will recapitulate it or revise it.
यस, आंसर इज 420. सो अब मुझे लगता है कि मैं जल्दी से ये वाला सम बोर्ड पे कर सकती हूँ, है ना? So 2 5s are 10. So I will written 1 here, 0 here, and 1 kahin side mein carry over. 2 3 is 6. So here, firstly, I will put a plus sign. 1 5s are 5, 1 3s are 3, and we are going to add these two numbers. 0, 6 plus 5 11, and here 410 or 420. Wait, 1 carry over. Sorry. 2 5s are 10, 0 यहाँ पे, 1 कैरी ओवर, 2 3s are 6, 6 plus 1 7. पहले मैंने वो ऐड नहीं किया कैरी ओवर. नाउ 7 plus 5 12, 2 here and 1 carry over, and 3 plus 1 4, and again we will write 420. Simple. Clear? Dinesh, are you done? Okay, good. So 420 is the answer. Yes, I have seen Yakshit. Harsh has written, I know 3-digit number. Very good. If you know. Divija, show me bachche. Divija, I am unable to see. Kridesh, show me. Okay, yes, Divija. बच्चे राइटिंग थोड़ी सी अच्छी करो. दिविजा, बहुत सारी कटिंग की हुई है आपने. हमने क्लास वर्क में भी अगर हम कर रहे हैं तो वी विल डू इट नीटली, है ना? हम ऐसे नहीं करेंगे कि किसी ने देखना नहीं है. यस, जस्ट राज, डन, सीन, आस्तिक, हृदय. ओके, डन बच्चे, आई हैव सीन. ओके, नेक्स्ट इज sum number, part number E. Now we are going to E part. E is 32 by 21. 32 by 21. Again same solution. 1 stands 32 multiply by 21. Do it. Anhadpreet Kaur. Are you doing bachche? Okay. Bhargavi has written 672. Raghav has written 662. So let's see whose answer is right. 72 or 62. Anisha, okay, ma'am, please unmute Anisha. 72. Sameer, 672. Jasraj, 672. It means जो सेकंड नंबर पे मैंने नेम बोला, बच्चे चेक योर आंसर. समीर था, आई थिंक. नहीं, समीर नहीं था. वेट, राघव बच्चे चेक योर आंसर. आंसर इज 672. So let's do it. राघव, अगेन 71 लिख दिया बच्चे आपने. हर्षित, रॉन्ग आंसर बच्चे. 372 you have written. It's wrong. So let's see. 1 2s are 2. And 1 3s are 3. Very simple. 2 2s are 4. 2 3s are 6. Here is 2. 4 plus 3 is 7. ये तो बहुत easy था. इसमें तो कोई carry over ही नहीं हुआ हमारे पास. Very easy sum, है ना? Vaibhav, you have written 671. It's 672. This sum is very easy, right? Kiran Noor, show me your notebook. Okay. So mostly students have written the answer. So let's move to the next sum. F part. F part is
86 by 26. 86 by 26. F is 86 by 26. So firstly, what we will do? Ones, tens, 86, 26. Right? Simple. Then, after that, wait, बच्चे Anisha, wait. Vibha ma'am, please unmute ID with Arman. Until then, solve your sum on your notebook and let me know the answer. When your answer will be complete, please write your answer in the chat box. Okay, Raghav has written. Whose mic is unmuted? Vibha ma'am, mic is unmuted. Ma'am, I'm asking him to unmute, but he is not unmuting. Anisha Bache, ma'am has given you permission. Just Anisha Bache, ma'am has given you permission. Just. We are unable to hear you, Anisha. Bache, if you have any doubt, you can write in the chat box if there is any problem. So one answer I have got, but I need more answers. Kriday and Raghav, there is too much difference in your answers. Kriday, Raghav and Bhargavi, answers are different. Kriday, Bhargavi's answer is same. So let's see, कोई बात नहीं, जितनी ज्यादा brainstorming होगी, जितने ज्यादा answers आएंगे, उतना ही हम explore करेंगे. हम बार बार देखेंगे whether our answer is right or not. Our Arav, Astik, okay. 2236. So let's see. 6 6 are 36. So 6 will be written here and 3 side में कहीं carry over. Okay. And 6 8 are 48. And 48 plus 3, 51. And in the next step, firstly at one's place, we will put a plus sign. 2 6 are 12. 2 will be here and 1 will be carried over. So 2 8 are 16. 16 plus 1, 17. 17 हम ऐसे complete लिखेंगे. Okay. So now we are going to add these two numbers here. Simple way में 6, 1 plus 3, 1 plus 2, 3, 7 plus 5, 12 and 2. 1 plus 1, 2. So this answer is right. 2236. Yes. So जिनका सबसे पहले ये आंसर आया था, very good. Right answer is. मैम जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया वो रफ करना है, इंपॉर्टेंट है बच्चे. आई डोंट नो आपने क्या लिखा है, लेकिन थोड़ा सा जो मुझे समझ आया कि आई थिंक आप यही पूछ रहे हो कि जो आपने वर्क करवाया कि वो रफ में करना है, इंपॉर्टेंट है. आई डोंट नो क्या पूछ रहे हो आप. तो सिंपल वे में मैं बता रही हूँ. द वर्क विच वी आर डूइंग इन अवर क्लास, right, in this online class, all the sums you will write on your classwork notebook. Simple way. There is no rough notebook, bachche. We don't have any rough notebook. We have two notebooks. One is classwork, one is homework. Okay. Homework is that where the worksheets are given. And the work which we do in the class will be done on the classwork notebook. Simple. Clear? So there is no rough notebook. I have not suggested to use any rough notebook or to use a notebook which you can make it rough. रफ का मतलब होता है कि आपने रफली लिखना है एंड हम रफ नहीं लिखेंगे. रफ लिखने से हमारी राइटिंग बिगड़ जानी है. आई नो. ओके. यस, Bhava, Jacqueline, Dhankor, very good. So this was the multiplication by big digit number. This time the numbers are big. 86 by 26 and यहाँ पे हर स्टेप में कैरी ओवर था. Okay, so there is no compulsion, लेकिन इसका कैरी ओवर तो यहाँ पे आया. So I have written carry over here. Okay, so I hope the sum is clear to you. Done? Shall I erase? कर दूं? Sirath, you can also write, बच्चे. Next is G part. G part is 64 by 25. 64 by 25. Okay. So
ones, tens, 64, 25, putting a multiplication sign, and then I have done, bache, Krishnam, I have done. So the answer was 2236. (64 by 25). So I am giving you time. Do it. So today we will just complete our 2-digit numbers multiplication ताकि आपको कोई doubt ना रहे. There will be no doubt left, right? So Sameer has written the answer. Hiya has written. Bhargavi, very good. Jivesh. साथ में बच्चे I also want to see your notebooks. जो जो करी जा रहे हैं आप अपनी नोटबुक मुझे शो करी जाओ. Divija, Vaibhav, Udayveer, yes, 1600. Very good. So let's do this. 5 fours are 20. 0 will be written here and 2 carry over. 5 6 are 30. 30 plus 2, 32. And in the next step, firstly we will put a plus sign. 2 fours are 8. 2 6 are 12. Simple. And here 0. 2 plus 8 is 10. And 1 here carry over. 3 plus 2, 5. 5 plus 1, 6. And 1 like this. Simple. 1600. So very good. The answers are same. So this makes me very happy that your answers are right. And जब भी आपके answers right होते हैं, this makes me disappointed. कि आपका आंसर सही नहीं है, that means you are not understanding. But when you give right answers, then this is the feeling of satisfaction that you have understood. Okay, done. So 5 sums we have done. So I hope you all have done these 5 sums in your notebook. So firstly, show me your notebook, bache. I want to see each and everyone's notebook. ID with Rajkaval, bache. You are talking to someone. Japanjot, bache, show me. Jacqueline, you have written the different answer. Japanjot, show me your notebook. Okay, Harsh, Gitansh, Josna, Dinesh. Dipakshi, show me your notebook. Anisha, seen, okay. Astik, Kanupriya. Japanjot is not showing. It means he is doing. Until then, ma'am, please paste the link. Kiran Noor, show me. Jasraj, Prabnoor, okay. Gurjot, Krishika, your videos are off. Avya, your video is off. Wait, Avya, bache. So until then, students, fill your attendance. Open that link and mark your attendance and come fast back. So we will do one more sum, one extra sum that I will give you from my side. This sum will be not on the book, okay? So from my side, that will be a practice sum. So there are links in the chat box. Click on any one link. So ma'am has sent it many times. You just have to click on one link, any link. Japanjot bache, I have not seen your notebook. Not even one time in today's class. Have you not done? Now you have off your camera. So next time, Japanjot, I will not take your name. Okay, so are you done your attendance? Ma'am, please unmute Avya Gupta. Now I have seen. Yes, Samir, I have seen. Good.
Okay, until then, let's do one more practice sum, and this sum is just from my side. अपनी तरफ से मैं कोई statement दे रही हूँ, okay? So यही statement डाल लो आप, multiply, और आप statement डालो, next sum डालते हैं हम, ठीक है? So write, find the product, because in this way the statement will be different, है ना? So find the product, and the statement is 75 multiply 34. 75 multiply 34. So this time I have taken the bigger digits, so I know you can do it. And the first student who will complete it, I also want to see his or her notebook. साथ में मैं वो भी देखूंगी कि आपका आंसर आपने कंप्लीट वे से किया है और नॉट. Find the product. Product means multiplication, and you have to multiply these two numbers, 75 by 34. I hope you all must have filled the attendance. Ma'am has again sent the link. If anyone has left, please mark it. Ketan Naran, there is no need for you, bache, to send the link again. Ma'am is there. She will handle. Not you, Hana. You just concentrate on your sums. Ma'am, please unmute Avya Gupta. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, bache. मैम जो आपने एक मिनट मैम जो आपने इसके पहले सम करवाया था मैम उसमें जो हमने प्लस करना था मैम वहाँ मैम 28 आना था कि 128 आना था. बच्चे मुझे ऐसे ऑरली याद नहीं है ना, लास्ट सम में हमने क्या किया था, मतलब स्टेटमेंट ऐसे याद नहीं है. बुक से था, सम नंबर था जी पार्ट, तो आप उसका आंसर देख सकते हो, या बाद में जब वीडियो आएगी तो यू कैन कंफर्म बाय वाचिंग द वीडियो अगेन. ऐसे ऑरली मुझे अब याद नहीं है कि व्हाट वाज द आंसर, कि 1 आना था कि 8 आना था. ओके, आप खुद कैलकुलेशन करके देख लेना बच्चे. अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए देन आस्क मी. Okay, so mostly students has written the answer. Simarpreet has first one to write the answer. 2000 कितना था? Bhargavi has written 2500 and others 2550. Simarpreet 2550, Sameer, Raghav, Josna. Astik 2500, Dinesh 3150, Anhad 1500. So there is lot of variation in the answers. Summer 2550. So I don't know whether whose answer is right, क्योंकि 5 टाइप के आंसर तो मैंने रीड कर लिए हैं चैट बॉक्स से. अवलीन 3150. वेट बच्चे, लेट्स डू दिस सम ऑन द बोर्ड अगेन. कृदे ने एक और डिफरेंट आंसर दे दिया. Kriday, your answer is also different. Raghav ka different hai. Dinesh, mostly students are giving the answer 2550. So let's see whose answer is right. Now stop writing in the chat box. So 1s, 10s, 75, 34. 4 5s are 20, 0 here, 2 carry over. 4 7s are 28, 28 plus 2, 30. Plus sign here. 3 5s are 15, 5 here, 1 carry over, 3 7s are 21, 21 plus 1, 22. So 0, 5, 5, 2. So those who have written the answer 2550 is the right answer. Kriday again wrong answer, bache. Anhad wrong, Krishnam wrong. So those who have given answer 2550, that's the right answer. और ध्यान से करा करो बच्चे. भार्गवी, this time your answer is also wrong. No problem.
अगर हम गलतियां करेंगे ओनली देन वी विल लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक, राइट? कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड नो नीड टू से सॉरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितनी ज्यादा ट्राई करोगे, जितनी ज्यादा मिस्टेक्स होंगी आपकी, उतना ही इजी होगा आगे आपके लिए, क्योंकि ऐसे आपके फिर डाउट्स क्लियर होंगे, ठीक है? और ध्यान से करा करो विद फुल कंसंट्रेशन। So this is the right answer, and today just 1 minute left, and today what we have done, we have again done the multiplication of 2-digit number with the 2-digit number. So this was just our revision also, that आज हमने एक ही टॉपिक लिया है to make your concept more clear. अभी भी किसी को any doubt, कुछ भी कोई डाउट है बच्चे, so you can ask me or you can message me also, अगर आपको कुछ समझ ना आए, ठीक है? सो वर्कशीट विल बी सेंड टू यू बाय द आफ्टरनून, और वो भी बहुत इजी होगी एंड इजीली यू विल सॉल्व दैट, राइट? एक्सक्यूज मी मैम। यस बच्चे। मैम सम 4 तरह के होते हैं, 5 तरह के होते हैं, 6 तरह के होते हैं, आना होगा। तो पार्ट्स कितने मर्जी हो सकते हैं बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ये बोल रहे हो जैसे ऊपर उन्होंने लिखा 2 मल्टीप्लाई हेडिंग है और उसमें h तक पार्ट है, ऐसे बोल रहे हो आप? तो कितने मर्जी पार्ट्स हो सकते हैं, डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। इस पार्ट में मैंने क्या किया,